بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خاص طور پہ ہم میڈیا سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو کہ کشمیر میں آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو تشدد ہو رہا ہے وہ تو چلتا آ رہا ہے، لیکن اب ایک بہت خوفناک سٹیپ انڈین گورنمنٹ لے رہی ہے، اور وہ خاص طور پہ ایک خواتین کے خلاف جو آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، جو کہ لیڈنگ فریڈم فائٹر ہیں کشمیریوں کی اور بڑے عرصے سے جیل میں ہیں. ان کے ہسبینڈ بھی جیل میں ہیں، 28 سال ہو گئے ہیں ان کو بھی، ڈاکٹر عاشق فختو کو. اور اب آسیہ اندرابی کے کیس میں انڈین کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے. 2012 میں انڈین سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن کی، ایک ججمنٹ دی کہ لائف امپریزنمنٹ کا مطلب ہے ٹل ڈیتھ. اب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ لائف امپریزنمنٹ دیتے ہیں تو یا 14 سال ہوتے ہیں یا 20 سال ہوتے ہیں. جب ڈاکٹر فختو صاحب کے 20 سال جیل میں کٹ گئے، ان کی فیملی نے ان کو ریکویسٹ کی کورٹ کو اب ان کو رہا کیا جائے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا انڈین کا کہ لائف امپریزنمنٹ مینس ٹل ڈیتھ. جو دنیا میں آپ کو اس طرح کہیں نہیں ملے گا ڈیفینیشن آف لائف امپریزنمنٹ. تو کلیئرلی اب وہ جو فیصلہ آنے والا ہے 14 جنوری کو یا 18 جنوری کو، ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، کورٹ کا فیصلہ دے گی، ان 2 دنوں میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. وہ ڈاکٹر آسیہ اندرابی کو بھی لائف امپریزنمنٹ، اور ان کو اتحاد جیل جدھر وہ ہیں، اور 2 اور خواتین کشمیری خواتین ان کے ساتھ اسی جیل میں ہیں، کہ ان سب کو سینٹنس لائف امپریزن کیا جائے. آج میرے ساتھ 2 فیملی ممبرز ہیں آسیہ اندرابی کے. ایک ان کا بیٹا ہے احمد بن قاسم، وہ ادھر ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہیں ادھر، اور یہ آفیشلی پاکستان گورنمنٹ کی اسکالرشپ پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی انلیگلی نہیں آئے. اور ایک ڈاکٹر مجاہد گیلانی ہے ان کے نیفیو. یہ آپ کو اپنے خود ایکسپیرینس بتائیں گے، خاص طور پہ یہ جو بچہ ہے آسیہ بی بی کا، کہ کس طرح کیا کیا ان پہ تشدد ہوا، ان کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا ظلم اور تشدد ہوا گیا، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے. And I want to address the international media also, that it is absolutely mind-boggling why the international community is silent on the issue of prisoners and on the inhumane treatment, the illegal treatment of Kashmiris in Indian occupied Jammu and Kashmir by the fascist Modi government. Why is the international community not speaking up? And I want to point out that what is being done to Kashmiris who are arrested is a complete violation of the 4th Geneva Convention, Article 49. Article 49 Geneva Convention کا بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کسی کشمیری کو، they known as protected people کیونکہ occupied territory ہے، آپ کسی کشمیری کو، protected person کو کشمیر کے علاقے سے نکال کے کہیں اور ڈپورٹ نہیں کر سکتے، ری سیٹل نہیں کر سکتے، چاہے کوئی جرائم بھی انہوں نے کیا ہو. آپ کو ادھر ہی ٹرائی کرنا ہے، ادھر ہی جیل میں رکھنا ہے. تو یہ کلیئر وائلیشن انڈیا کرتا جا رہا ہے بار بار، کہ کشمیریوں کو، آپ کو پتہ ہے انہوں نے علی گیلانی صاحب کو کئی عرصے جیل میں رکھا، کبھی ریلیز کر دیتے ہیں، کبھی ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں، نہیں تو اٹھا کے ہندوستان کے جیل میں پھینک دیتے ہیں. شبیر شاہ کو کیا ہوا ہے، اشرف سروانی ہے ان کو کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر فیاض ہیں، پھر آف کورس میر وائز عمر فاروق کے ساتھ جو تشدد ہوتا رہتا ہے، جو یاسین ملک کے ساتھ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے. یہ سارا انٹرنیشنل لا جس پہ ہندوستان نے خود دستخط کیا ہے، 4th جنیوا کنونشن، اس کی یہ وائلیشن ہے. تو the question then arises, when India is brazenly violating international human rights law, international humanitarian law, why is the international community silent on it? Why is the UN Secretary General, who speaks on everything else, COVID کی بات ہو, anything else,
which he sees as a human rights violation or even a human rights issue, he takes up. Why is Antonio Guterres silent on what the Indian government is doing to the Kashmiris? Why is Michelle Bachelet, the High Commissioner for Human Rights, the UN High Commissioner for Human Rights, not taking up this issue? Pakistan has written several letters to her. Yesterday again the Foreign Office sent a letter to her to take note. Why is Agnes Callamard, especially on extrajudicial killings, she's the special rapporteur, why is she not saying anything? These are the questions that we want to pose to the international community. Is human rights selective? If a Muslim's rights are being violated, does that not constitute or does that not demand a response by the international community? Yes, ये बहुत जुल्म और तशद्दुद जो हो रहा है और जो बात नहीं की जा रही, UN में नहीं की जा रही, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नहीं की जा रही, ये सवालात मैं समझती हूँ हमारी हुकूमत को भी ज़्यादा वोकली उठाने चाहिए. हमें विमेन कॉकसेस हैं दुनिया के पार्लियामान में, हमें उनको अपील करना चाहिए कि जब खास तौर पे जो खवातीन के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं कोई आवाज़ उठा रहा, जबकि वो और कई इश्यूज पे आवाज़ उठाते हैं. तो सवाल ये उठता है कि साइलेंस क्यों है. और फिर मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ. अगर आप जिनीवा कन्वेंशन हुई, फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन का आर्टिकल 76 देखें, उसमें भी एक कैटेगोरिकली प्रिजनर्स के हवाले से कहा गया है कि आप ऑक्यूपाइड टेरिटरी के प्रिजनर्स को नहीं ले जा सकते ऑक्यूपाइड टेरिटरी के बाहर, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ द ऑक्यूपेशन पावर. तो तिहाड़ जेल तो हिंदुस्तान में है जिधर वो सारे कश्मीरियों को डालते हैं. और फिर आर्टिकल 76 में खास तौर पे लिखा गया है, एंड आई वांट टू कोट, women shall be confined to separate quarters and shall be under the direct supervision of women. ये नहीं हो रहा. फिर आर्टिकल 76 also says कि it is compulsory कि जो prisoners हैं occupied territory के, उनको रेड क्रॉस के विजिट किए जाए. इधर तो वो डॉक्टर भी नहीं प्रोवाइड कर रहे. डॉक्टर आसिया अंद्राबी की सेहत खराब है, उनके साथ जो 2 खवातीन और हैं उनकी सेहत सही नहीं, लेकिन कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रहा. तो आप जिस पहलू से भी देखें, जिस धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इंटरनेशनल कवानीन की, तो इसके खिलाफ इस पे हमें ना सिर्फ आवाज़ उठानी चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की NGOs जो इंटरनेशनल NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि ये जुल्म क्यों दुनिया बर्दाश्त कर रही है, क्यों नहीं कुछ कह रही है इस पे. और अगर आप ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आर्टिकल 83 देखें, उस पे ये वॉर क्राइम है कि अगर आप आर्टिकल उसका 83 में आपको रेफरेंस दे दूं 2(8), उस पे है कि अगर आप द ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑक्यूपाइंग पावर of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation of transfer of all or parts of the population of the occupied territory within outside this territory. यानी कि ये जो हिंदुस्तान लोगों को बाहर से इंडियन सिटीजन्स को ऑक्यूपाइड कश्मीर में ला रहे हैं, ये भी वॉर क्राइम है. और जो आप कश्मीरियों को बाहर लेके जा रहे हैं, खास तौर पे उनके आप इंडियन प्रिजन्स में, ये भी वॉर क्राइम है. और अगर आप इसको पढ़ें आर्टिकल 143 फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन, जिस पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने अपने दस्तखत किए हैं, तो वॉर क्राइम्स का केस भी पूरी तरह बनता है. और मैं समझती हूँ पाकिस्तान को ट्राइब्यूनल डिमांड करना चाहिए इंटरनेशनल, जिसपे ये हिंदुस्तान के वॉर क्राइम्स की एक प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए, क्योंकि कानून सामने है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर देयर, इंडिया इज वायलेटिंग देम. और अब तो एक नया प्रिंसिपल आ गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जो कि 2005 में हमें वर्ल्ड समिट जो थी UN की, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्टेड इट, कि अगर किसी भी मुल्क में जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेवारी है कि वो इंटरवीन करे अंडर R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. सो सारे कवानीन मौजूद हैं,
तो सवाल वही बार बार उठता है कि क्यों दुनिया चुप है। ये हमारे में कोई हमने गलतियां की हैं, खामियां हैं कि हम केस नहीं प्लीड कर सके सही तरीके से, या दुनिया वैसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हिंदुस्तान जो मर्जी करे ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये इसके बावजूद कि इंटरनेशनल मीडिया हैज आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स यूएन स्पीच इन 2019 taken up the Kashmiri perspective, और पहली दफा इंडिया का जो नैरेटिव था on terrorism and so on, that is not holding. The narrative of linking RSS to Nazism is now being accepted far and wide. The Modi government is replicating what the Nazis did in Germany. But despite this, the governments, international community, the governments abroad, especially in Western states, who talk a lot about democracy and human rights, their silence is questionable. Because if they are silent on this, अगर आप बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाने देंगे हिंदुस्तान को, तो कल कौन से ममालिक उस पे चलेंगे? जिसकी मर्जी चाहे फिर कहेगा ये गई कन्वेंशन, these to hell with the Geneva Conventions. So अगर आप पूरे सिस्टम को जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, उसको तबाह करना चाहते हैं, तो फिर आप हिंदुस्तान को करने दें जो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलीव्स कि देयर आर इंटरनेशनल लॉज, देयर आर इंटरनेशनल कन्वेंशंस, और जैसे हमें यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज रेज करता है, तो फिर दुनिया को हर ह्यूमन राइट्स इशू पे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए आप इतनी चीजें करें, लेकिन हिंदुस्तान जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में कर रहा है उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि ऑक्यूपेशन के खास तौर पे कन्वेंशंस हैं, जैसे फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट्स हैं, खास तौर पे जो उन्होंने पैलेस्टीनियन वॉल पे दिए। सो द जजमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी आर देयर, स्पेशली द आईसीजे. The international media has been talking about what is happening. We now demand that the international community, especially the UN and human rights organizations, raise the issue of Dr. Asya Andrabi before the sentencing, because the sentencing, if it comes, is, in my view, and if you look at international law, according to international law, it is nothing less than judicial murder. इस पे कोई दो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर आप फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन पढ़ें, जो हिंदुस्तान डॉक्टर आसिया अंद्राबी के साथ करने को जा रहा है वो जुडिशियल मर्डर है, तो क्या दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेगी और चुप करके बैठी रहेगी? ये सवाल से मैं आपके पास आज छोड़ना चाहती हूँ। और अब मैं फ्लोर दूंगी आसिया अंद्राबी साहब की साहिबा के बेटे को कि वो बताएं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to thank everyone who's come here today. So, as Ma'am Sheema Zahir actually gave an overview of the case. So, I was born in the year 1999, and 7 years before my birth, my father spent 7 years before my birth in prison. And it was in 1992 for the first time that my father, along with my elder brother, who was an infant at that time, and my mother, they were detained on the Srinagar airport. Now, my brother at that time was 6 or 7 months old, and he became Kashmir's youngest political prisoner, if you want to call it. But little did he know that one day he would be the son of Kashmir's longest serving political prisoner as well, because as Ma'am said, my father has been behind bars for more than 26 years now, more than 27 years. So in 1999, within 2 months of my birth, after 2 months, my father was detained. I don't have any memories of it. And actually, ever since that day, he's been behind bars. And the only time I have seen him has been in the guise of a prison. The only time I've spoken to him has been in prison. The only time I have ever felt his touch has been in prison. And after father's detention, it was mother basically who looked after us, who raised us.
And we grew up in hideouts because father was involved in resistance movement, and then my mother Asia and Ravi, along with her other associates, she was involved in the resistance movement. So we had to grow up in hideouts. And for the first few years of my life, my mother's real name was kept from me. I didn't know who she was because of the fear and because of the insecurity that was attached to her name. Because she feared that if I were to tell someone that my mother is Asian Ravi, it would lead to her arrest. And that is something that used to happen. The police used to come visit our schools, and they used to interrogate my brother about the whereabouts of mother. This was after father was detained. And once she was there for us, she became everything for us. She was the one who cooked for us, cleaned for us. She was the one who tried to fulfill the void that my father had left in our lives. But then it was in 2006 that I witnessed my mother's detention as well. And that was basically the first time in my life I felt pretty much like a half orphan. And I was not an orphan, both my parents were alive, but the Indian state made me feel like an orphan despite the fact that both my parents were alive. And I remember asking my mother, I used to ask her, why exactly is our father in prison? I was 6 or 7 at that time. At that time, we don't understand how occupation works. At that time, we don't understand why the Indian state is in Kashmir. And she used to tell me that my father is in jail because he did not do his homework. Because that was the only thing that could make sense to me as a child. And I thought, okay, that is why my father is in prison, because उन्होंने homework नहीं किया. And there was this one time when I was missing my father and I deliberately skipped my homework, thinking this was the only way I could be with him. But that did not happen. And that is when I realized that it's not about homework, it's about something else. And then mother was detained as well, and ever since 2016, she has been in and out of prison. And she has spent 12 years of her life in prison. And mahine mein, once in a month I get to talk to her for 5 or 10 minutes. And even in those 5 or 10 minutes, the policewoman stands beside my mother, constantly reminding her of the fact that her time is running out. And it's in these moments that we feel how occupation kind of interferes in the most intimate and personal spheres of your life. I mean, why do these foreign or these alien forces think, or why do they feel entitled to deciding how long can a son speak to his own mother? And even when we used to go to prison to see my father, even the duration of hugs was regulated. After a certain point of time, we were told to separate. So I speak to my mother once in a month, and she's 60 now, and I'm 20, and we have barely spent some years together. And now that she's 60 and she's ill and she's in prison, it feels like the final stage of her life is already here, and I haven't yet spent any part of my life with her at our home. So this is something that, and this is not just my story, what I'm telling you is something that many other children in Kashmir go through as well. It's not just my story. People have had it worse. But I have this privilege of talking to you. I have this privilege of telling you how life is for us under occupation. So my mother always used to tell me that I used to ask her why our life is not normal, because it never felt normal. And she used to tell me that our life is normal, and I could never make sense of it. कि अबू नहीं है घर पे, अम्मा भी नहीं है घर पे, तो ये कैसी life normal है? But then as you grow up, you realize that when you talk about life under occupation, if you live happily, being under occupation, it's abnormal. If you're indifferent to the oppression around you, it's abnormal. So our people, they are fighting for their right to self-determination, and in this pursuit of self-determination, some of them end up in prisons, some of them end up in graveyards. But it's very human, because life under occupation is not normal. It's not normal that the only time I can speak to my mother is once in a month. And उस टाइम पर भी वो जो 10 मिनट है, उस टाइम भी पुलिस वाली साथ खड़ी होती है, बताती है आप क्या बात कर सकते हैं, क्या बात नहीं कर सकते अपनी माँ से. So it's all humiliating. And this is something that people here need to understand, that when you talk about occupation, yes, geopolitics is a part of it, yes, international law is a part of it, but there is this personal and emotional cost to it that so many children in Kashmir have to face. Thank you.
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मुजाहिद गिलानी को, ये नेफ्यू है आसिया अंद्राबी के, and he is actually Andrabi family has a big presence in Pakistan since 1947. So it's not just some of the members have come now, but they do have links to Pakistan from 1947 onwards. So, Thank you. आप इधर आ जाइए। Thank you, Madam Dr. Shireen Azari. I'm very grateful and thankful not only to Dr. Shireen Azari, to the Ministry of Human Rights, but also to the state of Pakistan, who has always stood behind and has always stood for the Kashmiris whenever it has been time, even when it was quite a difficult time for Pakistan. Ladies and gentlemen, today I present before you myself as the nephew of the lady in the veil, the person जिसको खातून आहन कहा जाता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर। मैं आज आसिया अंद्राबी की आपसे बात करने वाला हूँ। आसिया अंद्राबी 1960 की दिहाई में 1962 में इनकी पैदाइश हुई थी और एक बिल्कुल जिस तरह एलीट क्लास फैमिली में एक लड़की होती है, आसिया अंद्राबी की परवरिश और पैदाइश के बाद बिल्कुल वो ऐसे ही रही थी। उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशन में बैचलर्स किया और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से अरबिक में उन्होंने मास्टर्स कर लिया। आसिया अंद्राबी जिस तरह मैंने आपसे कहा एक एलीट क्लास फैमिली है, जो एक रिलीजन का भी एक थॉट है, एक सोशल थॉट है, कि हमारी आइडियोलॉजिकल थॉट है, उस तरह से एक जिंदगी गुजारते हुए इट वाज इन द मिड 80s दैट शी एक्चुअली गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। आला तालीम हासिल करना चाहती थी एंड शी वांटेड टू गो टू हिमाचल प्रदेश। इंडिया में आला तालीम हासिल करना जब एक ख्वाब था और ख्वाब के बाद वो एक लिहाज से उनका एक जज्बा बन गया कि मैंने आला तालीम हासिल करनी है। उस वक्त माहिर खैर आबादी की एक किताब उनकी नज़र से गुजरी और मरियम जमीला, जिसको आज भी वो कहती हैं कि वो एक आइडल हैं उनके लिए, जिनकी ज़िंदगी को पढ़ के वो ट्रांसफॉर्म हो गई। It was in the mid-1980s that Asiya Andrabi laid the foundation of Doktaran-e Millat. Doktaran-e Millat वो तंजीम साबित हुई जिसने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल रिफॉर्म, एक सोशल रिफॉर्म लाया। Apart, set aside from the self-determination, the right of self-determination, जिसके लिए सब बात करते रहे, लेकिन women को वहाँ पे एक पॉलिटिकल मैचुरेशन देने के लिए, एक मैच्योर करने के लिए आसिया अंद्राबी की आवाज़ बहुत अहम साबित हुई। It was in 1990s जब आसिया अंद्राबी साहिबा ने it was in 1990s when Asiya Andrabi Sahiba married Dr. Qasim Faktu, also known as Ashik Hussain Faktu, an Adipus, a scholarly person in himself, and the couple spent only a maximum of 2 to 3 years together, and their sons Ahmed bin Qasim and Muhammad bin Qasim were raised with their parents mostly behind the bars. Ladies and gentlemen, Asiya Andrabi was first arrested in 1992-1993 under the Draconian Public Safety Act, as we all know. It was only Muhammad bin Qasim. He was only 6 months old at that time. And this is very important to understand that she has spent almost more than 12 to 15 years behind bars ever since 1992 till 2020. And she is the only leading female rebel who has been slapped with PSA more than 20 times. Public Safety Act, वो draconian law, जो हिंदुस्तान हर उस हुर्रियत लीडर पे, हर उस आवाज़ के ऊपर लगा देता है जिसके लिए जो हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाती है। It was in October 2016 when Asiya Andrabi was arrested when she was in a hideout, and along with her, her personal associate Fahmida Sufi and the Secretary General of Doktaran-e Millat, Nahida Nasreen, were taken into custody as well. The role of Asiya Andrabi is very important to understand, and why actually she has been taken behind bars, and why at this point in time the Indian state is so hell-bent upon delivering a life sentence to a lady
whose husband is already behind bars and has been awarded a life sentence, whose family has been shattered with the son being at one place, the other son being in another place. The whole family is distorted and disrupted. But let's discuss it. The role of Asia Andrabi in the peaceful organization has always been to uphold the rights of the Kashmiris, particularly the women. She has always stood against the cultural imperialism that India tags as normalcy in Kashmir. The branded commodification of the poor, destitute Kashmiri women, the so-called cultural shows where India proves itself as an autocratic ruler, and the colonial feministic approach of the oppressor were always strongly denounced by Asia Andrabi, both in words and in actions. Asia Andrabi stands as a woman who considers that women should have their own identity, who considers that they have an equal role to play in the society just like the men, but in their own sphere. It was therefore the ladies of Doktaran-e Millat who urged the Kashmiri women to uphold their houses while the men took to the roads and the front gate in the freedom struggle. Political maturation in Kashmiri women led to a detestation by India, and therefore Asia Andrabi and her associates were always incarcerated under and framed under UAPA, under BSA, and now the Indian Penal Code. Ladies and gentlemen, Asia Andrabi को 2016 में श्रीनगर जेल में, सेंट्रल जेल में मुक़य्यद रखा गया था, लेकिन 2018 जुलाई का वो महीना है जब बिल्कुल जिस तरह रोशीन मज़ारी साहिबा ने कहा है, उनको मैं कहता हूँ अगवा करके नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी को भी लेकर न्यू दिल्ली तिहाड़ जेल की तरफ मुंतकिल कर दिया गया. It was basically under this FIR number RC 17/2018 NIA GLI, under the sections 120B, 121, 121A, 124A, 153A, 153B, and 505 of the Indian Penal Code, and section 18, 20, 38, and 39 of the UAPA, the Unlawful Prevention Act. These sanctions deal with the criminal conspiracy, the punishment for which is life imprisonment; waging war, the punishment for which is death or being a lifer; conspiracy to wage war, a punishment of 10 years; sedition, life imprisonment; promoting enmity, 3 to 5 years; prejudice to national integration, to the Indian national integration, life imprisonment; statements inciting the public, conspiring, attempting a terror act, 5 years or life imprisonment; being a member of terrorist gang, which definitely is not, running a very peaceful political movement of Doktaran-e Millat, life imprisonment; and offences as a member of terrorist gang, 10 years, and supporting terrorist activities, 10 years. Ladies and gentlemen, it was on 21st of December that the NIA ordered that they will be giving a verdict on either 14th or the 18th of January, and that has made this matter very important. Asia Andrabi साहिबा जो कि एक 7 साल से ज़ायद उम्र की खातून हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा जो कि बीमार भी हैं, इस तमाम चीज़ को देखते हुए साथ साथ नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी जो कि एक यंग एज के अंदर होते हुए भी lumbago, it's basically a chronic backache, उनको वो प्रॉब्लम है. आसिया अंद्राबी साहिबा is a patient of asthma. She is a patient of arthralgias, and she has been on medications for the past 6 to 8 years, and every winter she requires oxygen supplementation. But what happens in Tihar jail this time? Ladies and gentlemen, this is also to understand that back in 2008 she was taken into Amphara jail, Jammu, जहाँ पे 2 साल के लिए in a temple-like prison she was tortured by smoke inhalation. Continuous smoke inhalation has led to possible ILD, that is interstitial lung disease, and we suspect कि शायद lung fibrosis के element भी settle in हो चुका, but we don't have any access to a high-resolution CT scan or any other modality that we can actually prove it. But at this point in time, we know that Asia Andrabi is suffering from severe chest infection. Nahida Nasreen, almost of the same age, is also suffering from severe chest infection, while Fahmida Sufi was also suffering from an acute backache.
At this time, जबकि उनको शायद एक हॉस्पिटल फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, आसिया अंद्राबी और उनकी इनमेट्स को, जो उनके साथ उनके एसोसिएट्स हैं, they have been transferred to a penitentiary where the women who have been kept are murderers, drug dealers, drug addicts, and serial killers. Considering a political prisoner जिसको international तौर पे recognize किया जाता है, she is being transferred to a penitentiary where all these people, where all these murderers and rapists are being held as well. We have a concern, a very grave concern about these, because all these inmates, they harbor Hindutva nationalistic thoughts. For once, हमें शायद हिंदुस्तान के सामने जो फौजी हैं, जो वहाँ गार्ड्स हैं, जो वहाँ की अदालतें हैं, उनसे ज़रूर खौफ, उनसे डर है कि हमारे खिलाफ क्या फैसला आता है. But at the same time, we believe that the jail inmates, जो वहाँ पे कैदी हैं, वो भी वहाँ इन कैदियों के साथ आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं that the jail inmates, particularly the Kashmiri ones, they were not only beaten, but incidents of deaths have also been reported. Ladies and gentlemen, in this COVID pandemic, we know that the inmates, and it's reported that the inmate, along with Asiya Andrabi, turned out to be COVID positive. We have no information about how many tests were conducted after that and how many other inmates have contracted COVID-19 infection. We also know that the guard, the prison guard, outside the gates of Asiya Andrabi's prison, had also contracted COVID-19. We do not know how many times she had served Asiya Andrabi. We do not know how many times she had actually exposed Asiya Andrabi once again, Nahida Nasreen Fahmida Sufi, to the COVID-19 infection. Whereas internationally, every jail is being thinned out of its population to prevent COVID-19 infection from spreading, India is doing exactly the opposite of it. Ladies and gentlemen, this is important, that what we want, why are we here today as the family and as the state of Pakistan, hum jo demand karte hain, that is very simple. I have already narrated the sections, the articles and the charges unke upar frame kiye ja rahe hain, they are related to the terror activities as well. A peaceful political organization को एक terror nexus के साथ इस तरह से affiliate and annex करने का मतलब ये है that you are actually killing the peaceful political movement inside the Jammu and Kashmir. What the family at this point in time needs and demands is that DEM is being, the Doctoran Millat is being deliberately annexed to terror support and being terrorist organization, which will completely obliterate the strategy of political activism in Jammu and Kashmir. This clearly exposes the fact that Indian justice system, Indian judiciary, is merely an extension of the Indian oppression. Our demands is number one, is to probe into how these inmates are being kept, Asiya Andrabi, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi, keeping in view their age and their health. Our demand is to ensure a free and impartial trial, not under the Indian oppression and not under their Indian oppressive laws and regimes. Our demand is that stop victimizing Asiya Andrabi, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi in order to subjugate. Thank you. Madam. मैडम सही नाम है समा टीवी से हूँ. मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम जो है जिस पे आपने उनको खतूत भी लिखे और कोशिश भी की गई फॉरम आपको लेकिन स्टिल जो आसिया अंद्राबी साहिबा हैं और बाकी जो ख़वातीन हैं वो जेलों में कैद हैं, उनको टेरिटरी से बाहर भी शिफ्ट किया गया है. क्या जो ICJ का फोरम है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए? सीरियस मामला है, ये तो किसी इंटरनेशनल फोरम को नहीं बात नहीं था. देखिए ICJ, मेरा व्यू तो ये था और अभी भी है कि जैसे UN जनरल असेंबली में अभी एक रेजोल्यूशन पैलेस्टाइन पे बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है, हालांकि इजराइल US सब ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन UN जनरल असेंबली में मेजॉरिटी इज 1 वोट ओनली. तो हमें कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन ट्राई करनी चाहिए. ICJ में एडवाइजरी ओपिनियन थ्रू द UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन करना चाहिए. उससे ज्यादा अहम मैं समझती हूँ हर पार्लियामेंट में विमेन कॉकसेस हैं. हमारे एक UNC
سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے ویمن پیس اینڈ سیکورٹی 2000 کی. میرا خیال میں ہم نے اس کو یوز نہیں کیا جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس میں خاص طور پہ ویمن کے حوالے سے, کانفلکٹ زونز کے حوالے سے ریزولوشن ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے آسیان رابی کی آرگنائزیشن واحد ایک آرگنائزیشن ہے آکوپائڈ کشمیر میں جو خواتین کو سیلف ڈٹرمنیشن کے پلیٹ فارم پہ لائی ہے. تو اس آرگنائزیشن کو اگر آپ ختم کریں گے تو آپ بیسکلی پوری عورتوں کی موومنٹ کو آپ اٹیک کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے میں سمجھتی ہوں ہمیں زیادہ زور سے اٹھانا چاہیے. ایک تو آفیشیل چینلز ہوتے ہیں کہ آپ UN جنرل اسمبلی میں جائیں, پھر UN ہیومن رائٹس, لیکن ہم اسپیشل ریپورٹرز کو بھی نہیں انوالو کر رہے. میں سمجھتی ہوں جو UN کے اسپیشل ریپورٹرز ہیں ویمن پہ ہیں, چلڈرن پہ ہیں. پچھلے سال میں نے 18 اسپیشل مینڈیٹ ہولڈرز کو خط لکھا تھا UN کے, کیونکہ کئی بچوں کے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں, کئی خواتین کے, کئی ٹارچر کے. تو ان سب کو آپ کو اپیل کرنی چاہیے, ناٹ جسٹ دی UN جنرل اسمبلی یا UN سیکرٹری جنرل. UN کے بہت سے ادارے ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں اور زیادہ استعمال کرنا چاہیے. پھر آپ وہ کیا کہتے UK میں جدھر بہت بڑا کشمیری ڈائسپورا ہے اس کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پہ جا سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 83 جس کا میں نے بھی ذکر کیا. اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں ڈائسپورا نہیں جا رہا, اس کو وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. برطانیہ میں اب قانون آ گیا ہے کہ وہ اپنی فارن پالیسی میں سینکشنز اور ریسٹرکشنز لگائیں گے ان ممالک میں جو ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہے ہیں. تو دیکھیں آکیوپائڈ ٹیریٹری کا بہت واضح طور پہ قوانین ہے, پیلسٹائن کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی. تو ہمیں برطانیہ میں یہ پریشر یوز کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے یہ نیا لا بنایا ہے کہ ہیومن رائٹس ول بی اے میجر پارٹ آف دیئر فارن پالیسی, کہ وہ یہ ایکشن لیں گے جدھر جدھر ہیومن رائٹس ابیوزز ہوں گے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آکیوپائڈ ٹیریٹری میں جب ظلم اور تشدد ایک حکومت کریے تو آکیوپیشن پاور, اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. EU کے بھی یہی رولز ہیں. EU کی جو فارن پالیسی آئی ہے وہ اگر آپ پڑھیں اس میں ہیومن رائٹس کا بہت بڑا فیچر ہے. تو ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری میں جس میں خاص قوانین, بین الاقوامی قوانین ہیں, ادھر ایکشن ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں زیادہ ایکٹیویزم نہ صرف گورنمنٹ کے لیول پہ بلکہ جو ڈائسپورا ہمارا ہے, اور یورپ میں پاکستانی ڈائسپورا ہے, کشمیری ڈائسپورا بہت بڑا ہے, یہ چیزیں اور ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فارن آفس کچھ نہیں کر رہا, میں سمجھتی ہوں کہ اور زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ اب کیونکہ ایک ایشو ہیڈ آن آ گیا ہے اور 14 یا 18 کو اس پہ ججمنٹ آنی ہے, اس سے پہلے ہمیں مومنٹم بلڈ اپ کرنا بہت لازمی ہے تاکہ انڈین اسٹیٹ پہ پریشر پڑے. کیونکہ جو نئی انڈین سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے لائف امپریزنمنٹ پہ, اٹ از بیسکلی اگر یہ سینٹنس لائف امپریزنمنٹ کا آیا دیٹ مینز یہ جوڈیشل مرڈر ہے, اس سے کم نہیں ہے. تو ہمیں نہ صرف خود آواز اٹھانی چاہیے بٹ ڈائسپورا کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور گورنمنٹ لیولز پہ ہمیں یہ زیادہ فورسفلی میں سمجھتی ہوں ریز کرنا چاہیے. میم پارسا پارٹی فرام کنٹینیوز, جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سائلنس ہے, UN کی سائلنس ہے, تو آسیہ اندرابی صاحبہ کے کیس پر گورنمنٹ آف پاکستان اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور مجاہد بلالی صاحب آپ سے اور آسیہ اندرابی صاحبہ کے بیٹے آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ کرنٹلی جو کشمیریز ہیں ان کو اپنی یہ فریڈم موومنٹ کو پرسو کرنے میں کون سے چیلنجز اور کون سی ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پاکستان گورنمنٹ نے ابھی پھر خط لکھا ہے UN سیکرٹری جنرل کو اور ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کو, لیکن میں سمجھتی ہوں خط کے علاوہ ہمیں ایکٹیولی یہ پرسیو کرنا چاہیے. چاہے آپ ایمسری بھیجیں, آپ کی کشمیر کمیٹی بھی ہے, آپ کے کیا کہتے ہیں منسٹر بھی ہیں کشمیر افیئرس کے, آپ کی فارن آفس ہے, آپ کے پاس بہت سے ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں, دنیا میں جائیں, ہیومن رائٹس واچ کو کہیں, ایمنسٹی کو کہیں. میں سمجھتی ہوں ویمن کوکسز جو پارلیمنٹ کی ہیں ان سے بات کریں. یہ اس میں ایکٹیویزم چاہیے. ہم صرف بیٹھ کے فون کر دینا یا خط لکھ دینا میرے ویو پوائنٹ میں کافی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھنا ہوگا.
हमें कोविड हो या ना हो, लेकिन हमारी मिशंस हैं हर जगह. हम जूम कॉन्फ्रेंसेस पे आप बात कर सकते हैं और आप मैं समझती हूँ बहुत कुछ हम कर सकते हैं जो गालबन अभी हम नहीं पूरी तरह कर रहे. दूसरा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हमारे सबसे बड़े मेजर चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि लेट्स बी ऑनेस्ट, बीजेपी गवर्नमेंट यानी मोदी ने 2019 में जो 5 अगस्त का जो एक एक्शन लिया है उसके बाद से एक ब्लैंकेट कर्फ्यू किया गया एंड वो इंटरनेट शटडाउन तो अभी भी वहाँ पे इस तरह से मौजूद है. 1 नंबर 2, हमारा जो एलिमेंट्स है वो ये कि हमारे पास वहाँ जितने भी कश्मीरी यूथ दे कम ऑन द रोड या जब भी रेजिस्टेंस का एक एलिमेंट आता है वो बैन कर दिए जाते हैं. ये टेररिस्ट हैं और इन पे इतना इनाम है और कोई भी एक बंदा, या जरूरी नहीं है कि वो किसी भी तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व हो, एक आम स्टूडेंट हो, उसने सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बात कर दी हो, उसको भी वहाँ पे अरेस्ट कर दिया जाता है. सो जो कर्बिंग ऑफ वॉइसेस हैं वहाँ पे इस वक्त वो बहुत शदीद है. द रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट फ्रीडम, अबाउट सेसेशन, अबाउट सेइंग दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. सो वो आवाज़ इस वक्त बनना कि इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको इंटरनेशनल मीडिया, उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, ऐसे वो तमाम ममालिक जो कि कश्मीर के हवाले से बात करते हैं या करने चाहिए, वो तमाम के तमाम कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी आर फेसिंग एट दिस टाइम. बट अनफॉर्चुनेटली देखा ये जाता है कि जो कुछ इस्लामी ममालिक भी ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा रोल शायद प्ले नहीं कर रहे प्रो कश्मीर. तो जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो उस तरह से चेंज नहीं होता. satisfied from the role of government of Pakistan? The role of government of Pakistan has been proactive. After 5th of August 2019, खास तौर पे they have really taken up the issue of Kashmir over all forums that they could have, from United Nations से लेके OIC, every government platform, every international platform as well. But what we are actually concerned is that yes, they are becoming our voice. The situation on the ground is not really changing much. हमारे पास जो वहाँ पे कर्व्स हैं वो वैसे ही अभी भी हम फेस कर रहे हैं. But this is another element. जिस तरह अभी पिछले दिनों एक दूसरे इंडिया के खिलाफ एक निकला था, that investigative element, उसको पूरी दुनिया में फैलाया गया. That is one thing. This is another case. This is a chapter of Kashmir, Asiya Andrabi, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi. If the government takes it up once again, this is something that is hopefully and inshallah going to be wrapped up. Any other questions, especially from if any foreign media is present, we would take questions from them. If not, we can end the Q&A. Thank you. Thank you very much.